let us try to go ahead and divide time period in short versus long run. पहले इसको हमें समझना पड़ेगा कि what is short run versus what is long run in economics, and उसके basis पे we can go ahead and we can solve this thing. तो लिखो बेटा, please write it down. Short run versus long run. देखो, short run is defined as that period, ये वो period है in which at least one factor of production is fixed. कम से कम एक, एटलीस्ट वन, मैक्सिमम एक नहीं है, मिनिमम एक है, एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इफ इट इज फिक्स्ड देन इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट रन पीरियड. ठीक है. एंड हियर एटलीस्ट वन में जैसे मैंने आपको बोला, वन और मोर फैक्टर्स हो सकते हैं. नाउ व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? बेटा क्या क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? मैम बहुत सिंपल है. The factors of production can be factory land, that means land, machinery, labor, है ना, raw material, etc. अब some inputs are fixed, that means other inputs become variable. Variable inputs का क्या implication है? What is the meaning of variable inputs? Variable inputs go ahead and mean that they can be varied. Varied means it can be changed. Can be changed. So, long run period is that period in which few inputs can be changed and few inputs will remain fixed. जैसे for example, short run period, in which few inputs can be changed and few will remain fixed. जैसे for example, short run में I may not be able to change the amount of land. मैं जमीन नहीं change कर सकती हूँ, जितना land है उतना ही है. I cannot change the amount of machinery, but I can change the amount of labor. I can change the amount of रॉ मटेरियल. तो इन शॉर्ट रन ये हो गए मेरे फिक्स्ड इनपुट्स, एंड इन शॉर्ट रन ये हो गए मेरे वेरिएबल इनपुट्स. अब हम बात करेंगे लॉन्ग रन पीरियड की. इन इकोनॉमिक्स, a long run period is defined as any period in which all factor of production are variable. In which all factor of productions are variable. माने there is no fixed factor of production. सब कुछ वेरी कर सकते हैं. And since there is no fixed factor of production, because everything can be varied, nothing is fixed, therefore there is no fixed cost. There is only variable cost. Fixed cost नहीं है बेटा, सिर्फ variable cost है. Only variable cost. ठीक है. अच्छा, now in short run हमारे पास एक concept आ जाता है which is called as law of diminishing returns. माने शॉर्ट रन में बिकॉज सम फैक्टर आर फिक्स्ड, क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड हैं,
and some factors are variable, कुछ variable हैं. That is why we have the concept of diminishing return. Diminishing return में क्या होता है? The marginal product of the variable input. जैसे अगर मैं बोलूं कि capital is fixed in short run and labor is variable. तो जब हम marginal product of labor निकालेंगे, we'll find that this is diminishing. Marginal product of the variable will be diminishing. और इसका रीजन क्या है? वी नो दिस. द रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. क्या रीजन है इसका बच्चे? द रीजन इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इन द लॉन्ग रन हम बात करते हैं, इन लॉन्ग रन वी फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. So in long run there is no concept as variable proportion, क्योंकि everything is variable ना, सब कुछ वेरी कर सकता है. तो यहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. और रिटर्न्स टू स्केल क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? इन विच वी चेक हाउ आउटपुट चेंजेस एज ऑल इनपुट्स चेंज. माने अगर मैं कैपिटल को डबल कर दूं, लेबर को डबल कर दूं, तो मेरा आउटपुट कैसा रहेगा? If I check this, that if I double capital, if I double labor, how my output is going to go ahead and change? कैसे मेरा output change होगा? That can be said as the law of returns of scale. This is what we call as the returns to scale. ठीक है. तो I hope the difference is clear between short run and long run. तो अब एक हम we'll make a difference. This is short run and this is लॉन्ग रन. एक शॉर्ट रन हो जाता है, एक लॉन्ग रन हो जाता है. राइट बेटा, प्लीज राइट डाउन. यहां पे आ जाते हैं हमारे इनपुट. राइट. इन शॉर्ट रन सम इनपुट्स आर फिक्स्ड. इन लॉन्ग रन all inputs are variable. In short run, therefore, the costs are two: fixed and variable cost. मतलब अगर मुझे शॉर्ट रन में कॉस्ट निकालना होगा, then we can go ahead and say that the short run cost, total cost, is total fixed cost plus total variable cost. Right? Whereas when we talk about the long run, क्योंकि all inputs are variable inputs, so we can say that total cost will be total variable cost. So in short run, we can go ahead and say that total cost will have fixed and variable cost. But in long run, we can say total cost will be total variable cost. Is it clear? Okay. Now, this is about the cost beta. अब हम बोल सकते हैं that in short run, there will be law of diminishing return. In long run, there is law of return to scale, right? In short run, एक और चीज आ जाता है which is only related to perfect competition. And what is that thing which is related to perfect competition? We know that in short run, we notice that we can have entry or exit of the firm. But in long run, we attain equilibrium. In long run, we attain equilibrium. ये बात समझ में आती है?
Is it clear? So this can be the difference between your long run and short run. Okay.